commission with member of credibility, good constitution and impeccable integrity. The government shall also pursue to collect the no assets, no deposits inside and outside India declaration from member of parliament, legislation, assembly, judicial executive and the like. The conference appeals to the government of India releases white paper on this actress decide confection of illegal assets and black money deposit inside and outside India. Assalamu alaikum. Thank you, Mohammad Javed Saab. Next, we would request Mr. Ashim Roy, trade unionist from Ahmedabad, to speak on the topic of encounter killings, a situational study. Mr. Ashim Roy. To this very important conference of the Popular Front of India, to the esteemed chairpersons and the people who are on the dais, and to the brothers and sisters from different parts of the country, particularly the intellectuals, the activists of the Popular Front of India, who assembled here in this dust of Ramlila Maidan to really shape the future of India. I congratulate you all. It's very important that as we have, after 15 to 60 years of a growing democracy, that we learn to shape our own country, our own nation, and our own democracy. And I see the offshoots and the symbols of that fighting democracy among you. Thank you very much for being here. I think it's very important to understand that democracy cannot be given by someone. It has never been in history given by someone. Democracy is always interpreted from the 2 points of view: the one who is ruling and the one who is oppressed, the one who is ruled. And at no point of history has democracy come just by a gratis, by a gift of anyone who is ruling. And so it's very important when we build up a social of social justice, that at the core of social justice there has to be a concept that is deeply embedded, ingrained in our mind and our body, of what democracy means. Because that is the core of a process of bringing social justice. I know people who have come here are coming from different parts, from different activists and different traditions. We are defining a very new notion of social justice. Some people have defined the social justice from a concept of modernism, as if it's only a secular notion. What we are trying to define is a notion, is an idea of social justice that can come from religion, that can come from modernity, that can come from left tradition, that can come from social tradition. It is the confusion, it is the confluence of all this tradition that will actually bring social justice to this country, and you are also going to become a part of that social justice movement. And people have always taken democracy in their hand. Let us not forget 1975. Even the simple act of election, when it was taken by the then Prime Minister Indira Gandhi, it was not the government which gave it back. It is the people of this country who took that election back and said, we will form the government, and so people have a power to change the course of democracy, to change the course of social democracy. And this is what is needed. And I hope in this conference, for the last 2 days, and in the seminars that we are going to do, we are going to address, we are going to think about it. We are going to internalize this in our mind, in our movements, and in our actions. It is in this context I want to bring the question of encounter killing. Because democracy is undermined fundamentally by the people who are in power. And one of the means that is historically always has been and will be that when states decides to do something which is not lawfully done, or which is something
that they cannot do lawfully. Not only it is not done, but they cannot do it lawfully. We have a recent example in front of us in the last 1 week and 1 month. Let us not forget Gaddafi. Let us not forget that he was killed. Whatever be his crime that people can say, whatever be his cause for what he fought for, but no one can be killed without the judicial process of law. But governments have always killed people without the judicial process of law. And the index of democracy, the index of social justice, is when people who fight for social justice, who fight it peacefully, who fight it democratically, who fight it by demonstrating on the roads, who fight it in the entire world, if they are fighting peacefully, they have a right to be treated peacefully by rule of law and not by extrajudicial killing. That is what is important, and that is what is the index of democracy. I come from Gujarat. Part of my time spent there. Part of the time I spend in various parts of the country trying to build up a new union movement. And I have believed always that the union movement, or any movement for that matter, has to be at the core believing in democracy, whatever be the tradition. I was fortunate enough, and I want to share, Kharna Sahab bhi yahan hai. Chalega kya? We were both together in Tehran. We are both together in Qom, actually. I had the privilege of actually discussing with Ayatollah Javeli, one of the highest scholars of Muslim world. And we didn't mince away from talking there and said, what can bring the secular movement? What can bring the secular movement, an atheist movement, to the movement which is drawn from a religious tradition? It is not my word, it is his words. His words were, the intention should be pure. If the intentions are pure, it doesn't matter from which tradition you come from. It doesn't matter. In my intention, I'm a religious man. I have two worlds to look after. But if you do not believe in atheism, if you do not believe in, if you are an atheist, it doesn't matter. But your intentions have to be pure. People who assemble in this conference, people who are going to be the movement of social justice, have to have the pure notion of social justice. Not only justice for me, not only justice for my brothers, not only justice for my community, but for every human being that exists in this country and in this world, there has to be social justice. Then only the social justice can be powerful. And so when a government does extrajudicial killing, it's a long tradition in Indian government. Ishrat is not the first one in Gujarat that has happened. It happened from Manipur. It happened from Mizoram. It has happened in Naxalite movement. It has happened in the Maoist movement. It has happened in Kashmir. It has happened in every part of this country where the police does not want to believe in a rule of law. You can have Daya Naik in Bombay. But every time there has been an extrajudicial killing, in India, there's always a legitimacy that comes up. And this is very important. The movement for democracy has to break this legitimacy for extrajudicial killing. And extrajudicial killing can only happen when prejudice exists in a society. When people are smugglers, and an ordinary police becomes a hero by killing him, it tells us the deep inside our mind that we don't mind someone being killed. But these are individual cases. When it happens to a community, when it happens to a Muslim community, when it happens to people in Kashmir, when it happens to people in Mizoram and Manipur, we didn't talk up. We didn't stand up. And let us be very clear, a state that learns to do extrajudicial killing will always keep on killing until unless it is stopped by the people of this country. And so it's very important for all of us to understand the legitimacy. Whether you're Muslims, whether you're labor leaders, whether it's a people's movement, all movements have to unify on one point of view. That the core of social justice
has to be something that tells you that democracy is the right of people, to protest is the right of people, to dissent is the right of people. So long I do it peacefully, the state has to act with me and against me, if it has to act against me, also by rule of law. So there should be a declaration. From this dust of Ramlila Maidan, people should say the most oppressed people of this country, the laborers, the Muslim community, the Dalits, we will fight our battle for social justice. We will fight our battle for labor rights. But the core of it is we have to also fight that the state behaves lawfully, that the state knows how to behave lawfully. And with those states which do not behave lawfully, as always has been, the people will uproot it and protest against it and throw up this government. It is for that reason I believe that your conference and your seminar is very important. I believe that you are building up a notion of social justice that will oppose every kind of extrajudicial killing, not only of Muslim brothers, not only of my sister in Gujarat, but every democratic-loving citizen, every human-loving citizen, whenever he is battled against by a state and by police in an extrajudicial fashion. When he's killed in encounter, whether it's in the jungles of Andhra Pradesh, or whether it's in the streets of Ahmedabad, or whether it's in Srinagar, or whether it's in Mizoram, every time an extrajudicial killing stops, if you all stand up, if people of this country stand up, the country will be much more benefited and we will have the power of democracy. I only wish and appeal that all of you can stand up to that cause, and as you are standing today, we will all unite to build a new India, to build an India of social justice. Thank you very much. Thank you, Mr. Hashim Roy. Quite an encounter that was with encounter killings. We thank you so much for your views on that. Next, I would like to call on Mr. Abdul Hamid Master, General Secretary, Popular Front of India, Kerala, to read out the next resolution. Assalamu alaikum. Provide right to reject the candidate in elections. The Social Justice Conference of Popular Front of India calls upon the central government to respond to the public demand for effectuating right to reject the candidate in Parliament and Assembly elections. The Representation of People Act 1951 and its rules provide a detailed mechanism for contesting and voting at elections. The Government of India has framed Conduct of Election Rules 1961 to provide the manner how voters are to be cast and the precaution to maintain the secrecy of voting. But the present code and procedure do not accede to the desire of the public to reject the candidate. The Election Commission of India, as far back as 2001, suggests the central government to make necessary modification in the rules by providing a slot inscribing none of the above nota in the list of candidates in the electronic voting machine. At present, when voters feel disgusted and disappointed at the nomination of undesirable, unsurplus candidates, and they abstain from voting, but are not able to convey their resentment effectively. The introduction of none of the above on electronic voting machine would redress the grievances of the electorate to some extent. Therefore, the central government shall immediately pursue necessarily amendments to the rules providing a slot for nota in the voting machine in all future elections so as to enable and recognize the supremacy of voters. Thank you very much. शुक्रिया जनाब अब्दुल हमीद मास्टर साहब जनरल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
केरला। हमारे दरमियान डॉक्टर उदित राज तशरीफ फरमा है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वो कौमी सदर ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं एडवोकेट जफरियाब जीलानी साहब को दावत देने जा रहा हूं, जो कन्वीनर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हैं। आप अपने तासुरात पेश करेंगे। जनाब एडवोकेट जफरियाब जीलानी साहब, कन्वीनर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। मोहतरम सदर जलसा और सभी साथियों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केरल और कर्नाटक से आए हुए और हिंदुस्तान के दीगर सूबों से तशरीफ लाए हुए यहाँ मंदूबीन और मुख्तलिफ जमातों और सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदा हजरात, अभी मुख्तलिफ सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स पर और मुख्तलिफ पहलुओं पर हमारे साथियों ने इज़हार ख्याल किया। जाहिर है कि 10 मिनट में तमाम पहलुओं को टच नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अब्दुर्रहमान साहब की इजाज़त से सिर्फ एक पहलू को टच करना चाहूँगा। और उसके इत्तेफाक से उदित राज साहब यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे जितने दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कॉन्फेडरेशन के सदर भी हैं। इस वक्त कुछ सूबों में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान तकरीबन हर रोज़ वरना हफ्ते में एक आध मरतबा मुसलमानों को रिजर्वेशन की एक अच्छी सी बयान भी देते रहते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सोशल जस्टिस तो यकीनन बहुत वसी कंसेप्ट है। जैसा अभी लोगों ने कहा कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ मुसलमानों को लेबल करना, मुस्लिम नौजवानों को जेलों में सड़ाना, उनके ऊपर हर किस्म के मजालिम करना, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। और हर बात के अलग अलग मुख्तलिफ पहलू हैं। रिजर्वेशन न मिलना ये भी उसका एक आस्पेक्ट है। 60 साल से एक नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ ये हो रही है कि अगर से कहा जाता है कि यहाँ पर रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है, लेकिन मुसलमानों को धर्म के आधार पर ईसाइयों के साथ महरूम रखा गया है रिजर्वेशन के एक कैटेगरी से। और वो कैटेगरी वो है जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है, यानी दलित समाज, जिसके बारे में सबको इस पर इत्तेफाक है कि हिंदुस्तान में 5000 साल से और ज़्यादा अरसे से वो दबाव कुचला हुआ है। उसमें एक तबके को कि जो हिंदू मज़हब का मानने वाला है उसको तो उठाने के लिए शेड्यूल कास्ट करार दिया गया, और जो मुसलमान या ईसाई मज़हब के मानने वाले हैं उनको वो फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। हम समझते हैं कि आज 60 साल के बाद हुकूमत के अपने अपॉइंट किए हुए कमीशंस ने, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, चाहे सच्चर कमेटी हो, इन्होंने इस बात का इकरार किया और सिफारिश की कि यह धर्म की कैद खत्म होना चाहिए। आज हमारे जो कांग्रेसी हुकूमत के वज़रा हैं वो बयान रिजर्वेशन पर ज़रूर देते हैं, लेकिन मुझे अभी तक न सलमान खुर्शीद साहब का बयान नज़र आया, न दिग्विजय सिंह का बयान नज़र आया कि ये मामूली सी तरमीम जो पार्लियामेंट एक सिंपल रेजोल्यूशन से कर सकती है, वो करने के बारे में उनकी क्या राय है। वो उलझाने के लिए मुसलमानों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई करवाने के लिए ओबीसी कैटेगरी में तो रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सच्चर कमेटी के रेफरेंस से, रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रेफरेंस से वो ओबीसी की कैटेगरी को फैलाकर ये कोशिश कर रहे हैं तासुर देने की, जैसे कि उसमें मुसलमानों के वो तबकात जो अभी तक बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं है शायद वो भी लाने की सोच रहे हैं। जबकि ऐसा करने से जो पहले से मंडल कमीशन से आइडेंटिफाइड ओबीसीज हैं उनको यकीनन तकलीफ होगी, शिकायत होगी और झगड़ा हो सकता है, आपस में इख्तलाफ पैदा हो सकता है। श्री कृष्णा ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश उन मुसलमानों के लिए जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, यह कतई नहीं है कि उनको उसी 27% में जोड़ा जाए। यह उनका एक सजेशन है। उनका दूसरा सजेशन ये है कि उसके बारे में हुकूमत और कोई तदबीर सोच सकती है, यानी हुकूमत को इस बात का ऑप्शन है कि हुकूमत अगर कहीं पर 50% से रिजर्वेशन बढ़ रहा है तो जिस तरह तमिलनाडु में 69% तक रिजर्वेशन हो सकता है, वैसे मुसलमानों को अकोमोडेट करने के लिए वो तरीक़ाकार भी सोच सकती है। लेकिन वो तरीक़ा जो नहायत आसान है, जिसमें सिर्फ एक सिंपल रेजोल्यूशन से 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर
अमेंड करना है जिसमें या तो धर्म की कैद खत्म करना है या मुसलमान और ईसाई को शामिल करना है, उसके बारे में हमारी हुकूमत क्यों नहीं ऐलान कर रही है? ये बात हमारी समझ से कासिर है। मैं अपनी समझ से कासिर हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत जानबूझकर चूंकि कुछ देना नहीं चाहती है, ये भी एक तरीका है उसको उस बात को उलझाने का। लिहाजा मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारों के जरिए से चाहता हूं दिल्ली के इस रामलीला मैदान से भी आवाज जाए कि हम हुकूमत की इस चालबाजियों को अच्छी तरह समझते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो सबसे पहले पार्लियामेंट के हालिया इजलास में, जो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, इस नाइंसाफी को दूर करे जो 60 साल से मुसलमानों के साथ हो रही है कि मुसलमान वही काम कर रहे, यानी मेहतर का काम करे, धोबी का काम करे, नट का काम करे। अगर वो हिंदू है तो वो शेड्यूल कास्ट है, अगर वो मुसलमान है तो उसको शेड्यूल कास्ट का फायदा नहीं पहुंच रहा है। अगर उसको ये फायदा पहुंचे तो वो उस तमाम सियासी लड़ाइयों को भी लड़ सकता है, इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकता है और उसकी यकीनन नुमाइंदगी ज्यादा बड़े पैमाने पर हो सकती है। ये बात एक सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा। इस प्लेटफॉर्म से ये मौका है, पार्लियामेंट चल रही है, इस आवाज को उठाने का। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हुकूमत के जो तरीक़ेकार हैं वह उससे सब लोग वाकिफ हैं। यकीनन जैसा अभी कहा भी गया कि सियासी कुव्वत के जरिए से ही आपको हक मिल सकता है, खुशामद से हक नहीं मिला करते। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती यह है कि जुनूबी हिंदुस्तान में इसके बारे में ज़्यादा कॉन्शसनेस काफ़ी दिनों से मौजूद है। जुनूबी हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग ख़त्म पूरे हिंदुस्तान में होने के बाद भी वहाँ पर जिंदा रही और 57 से ही उसको वहाँ पर सियासी ताकत के शिरकत का मौका मिला। कर्नाटक के लोग भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या इसके जो पहले तंजीम थी उसके ज़रिए से काफ़ी हद तक अपने सियासी हुकूक के लिए कॉन्शियस हो चुके हैं। लेकिन अभी आप शुमाली हिंदुस्तान में आप आए हैं, आपको अंदाज़ा है अबू बकर साहब और अब्दुर्रहमान साहब काफ़ी दिनों से हिंदुस्तान में, शुमाली हिंदुस्तान में चक्कर लगा रहे हैं। इनको खूब अंदाज़ा हो गया होगा यहाँ की जहनीत का। तो यहाँ दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जो मुसलमानों को अपने जो सियासी फ्रंट पर मुसलमान काम कर रहे हैं उनको भी इसका एहसास है और होना चाहिए कि जब तक मुसलमानों को वो सियासी कुव्वत हासिल ना हो जाए जो जनूबी हिंदुस्तान में केरला वगैरह में हासिल है, तब तक यहाँ पर सियासी लड़ाई के साथ साथ जो सियासी कुव्वतें हैं उन सियासी कुव्वतों में भी अपनी बात कहने की जुर्रत मुसलमानों में होना चाहिए और उनके जरिए से अपने मुतालबात को पूरा करवाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अगर मुसलमानों की यहाँ नहीं होगी तो यकीनन हम बहुत पीछे और चले जाएंगे। लिहाजा इस वक्त चूंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, शुमाली हिंदुस्तान के कई सूबों में इलेक्शन होने वाले हैं, इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ये कॉन्फ्रेंस यकीनन ये अहम पैगाम दे सकती है शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि दोनों फ्रंट पर वो लड़ाई लड़ें और दोनों फ्रंट पर कोशिश करें अपने उन मुतालबात की जो उनके देरीना मुतालबात हैं। अभी हाल में कुछ मुतालबात नए पैदा हुए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट से हमारे तालीमी इदारे मुतासिर हो रहे हैं, हमारे मकतब और मदरसे मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत का एक एक्ट जो आने वाला है 2012 में, डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल के नाम से, उस पर तमाम मजहबी इबादतगाहें मुतासिर होंगी, मस्जिदें और मकबरे और दरगाहें मुतासिर होंगी। इसी तरीके से वक्फ का बिल हमारा 2010 से सलमान खुर्शीद साहब उसको पेंडिंग रखे हुए हैं, मुसलमानों के मुतालबात के मुताबिक उसकी तरमीमात नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल जस्टिस के सिलसिले में उसका पार्ट है। हमारे तमाम मुतालबात, जो कि वक्त कम है, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, बहुत वक्त के अंदर ही 10 मिनट का वक्त मुझे दिया गया था, तो इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए कहूँगा कि ये तमाम वो मुतालबात हैं जो पैदा किए जाते हैं, ये मसाइल नए नए पैदा किए जा रहे हैं हुकूमत के ज़रिए से और ये पैदा किए जाते रहेंगे क्योंकि मौजूदा वक्त की हुकूमत और इस तरह की दीगर तमाम पार्टियां ये जानती हैं कि मुसलमान अपने मसाइल में उलझा रहेगा तो वो सियासी हिस्सेदारी की तरफ कम मुतवज्जे होगा और अगर उसके कोई ये मसाइल नहीं होंगे तो यकीनन वो सियासत में अपने हिस्से को ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा मुस्तैदी से और ज़्यादा इत्तेहाद के साथ मांग सकता है। लेकिन हम इसके बावजूद भी कहीं से मायूस नहीं हैं।
मुसलमान यकीनन उसके अंदर वो खौफ व हरास नहीं है जिसका कि तस्वुर कुछ दिनों पहले किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मुतालबात को करने में किसी से डरते हों, किसी से झिझकते हों या किसी से मरूब होते हों। अब इस रामलीला मैदान में बांगे दुहल तमाम लोग अपने मुतालबात को करने में बेझिझक हैं, किसी भी डर का उनके अंदर एहसास नहीं है और न किसी सियासी कुव्वत से मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा हमें उम्मीद है कि हम अपने मुतालबात को इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज फिक्स करेंगे कि कौन सा मुतालबा किस वक्त किस हुकूमत से किस सियासी ग्रुप से किया जाए और कौन सा मुतालबा किस वक्त किया जाए। हम किसी मुतालबे से न दस्तबरदार होते हैं और न किसी मुतालबे के लिए ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा यही एक मुतालबा है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारों को, तमाम कारकुनान को जो दूर दराज इलाकों से यहाँ आए, ये मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी ये कॉन्फ्रेंस शुमाली हिंदुस्तान में भी वो कुव्वत और वो आपका जो अज़्म और हौसला जो जुनूबी हिंदुस्तान में मैंने देखा है उसको आम करने में मददगार साबित होगा और शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमान आपके इस तजुर्बे से मुस्तफीद होंगे। शुक्रिया। मशहूर एडवोकेट ज़फ़री अब जिलानी साहब बोल रहे थे, हम आपके मशहूर हैं। जनाब अब्दुल वाहिद सेठ साहब, वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हमारे सामने रेजोल्यूशन का एक हिस्सा पेश कर रहे हैं। Repeal draconian laws. The Social Justice Conference of Popular Front of India appeals to the central government to repeal draconian laws of the country. The state has armed itself with black laws such as Armed Forces Special Powers Act, Unlawful Activities Prevention Act, MCOCA, KCOCA, etc. All these are irrational, unjust, and against the rudimentary tenets of natural justice. These laws justify preventive detention, in-camera proceedings, rejection of bail, persuasion and extraction of confessions by any method. The successive political parties in power sanctified the de facto policy of extrajudicial killings by members of the police forces, the armed forces and paramilitary security personnel in Jammu and Kashmir, Assam, Manipur, Tripura and state armed police in Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat and so on in the name of combating terrorists, Naxalites, Maoists or criminals. The United Nations basic principles emphasize that the use of forces and firearms by law enforcement agencies should be in consonance with respect for human rights. The Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to life, liberty and security. Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Extrajudicial killings clearly contravene the right to life. Hence, this conference calls upon the central government to reform the criminal justice system and the penal code, beginning the process by repealing all special legislations enacted on pseudo-concepts of combating terrorism, Maoism, communalism, which enable culture of torture and culture of impunity. Thank you. शुक्रिया अब्दुल वाहिद साहब। अब दलितों की तक़वियत के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे डॉक्टर उदित राज, कौमी सदर ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस। डॉक्टर उदित राज। Shall I speak in Hindi or English? नहीं, किससे ज्यादा समझेंगे लोग?
Brother Abdul Rahman, Chairman, Muhammad Ali Jinnah ji, Popular Front के वाइस चेयरमैन, सिद्दीकी जी, मुकर्रम मोहम्मद जी, शरीफ जी, मेरा ख्याल है कि हिंदी बोलने से ज्यादा लोग समझेंगे। कि ऐसा क्या हिंदी में बोला जाए कि अंग्रेजी में? हिंदी बोलिए। हिंदी में। फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी जिलानी साहब को भी सुना और आप लोगों की भी तकरीर हमने सुनी, और आपके प्लेटफॉर्म पर मैं कालीकट तक गया हूं, केरल भी गया हूं आपके कहने पर। जहां तक दलित एम्पावरमेंट की बात है, उनका एम्पावरमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अकलियत का एम्पावरमेंट नहीं होता है। मजहब को अगर छोड़ दिया जाए तो अकलियत की जो राजनीतिक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पोजीशन है, more or less Dalits also have the same grievances, same problem, except that religion, that is different, but other problems are almost similar in case of both the communities. इसलिए जब इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं या मसाइल एक जैसी है, तो दोनों को मिलकर के इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी तंजीब चलाना चाहिए और बहुत बड़ी तहरीक चलाना चाहिए, तभी जाकर के दलित एम्पावरमेंट इस देश में हो पाएगा, वरना अकलियत अकेले रहेगी और दलित का एम्पावरमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और मीडिया ने जिस तरह से देश के सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा या यही एक मुद्दा, सब यही लड़ाई लड़ें, पेश किया, तो उसके सामने अकलियत की समस्या, एक आदिवासी की, एक दलित की समस्या छोटी पड़ गई या तो थी ही नहीं। अभी CSDS की ओर से एक चर्चा, एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें से जन लोकपाल के दोनों प्रोटोगोनिस्ट अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण भी जी थे वहां, अरुणा राय जी भी थी। क्योंकि बहुजन लोकपाल बिल मैंने बनाया था तो मुझे भी बुलाया गया था, और जयप्रकाश नारायण भी थे वहां पर। तो हमने अभी इस समय 4 या 5 जो बिल हैं, सरकार का बिल, बहुजन लोकपाल बिल जो हमने बनाया, एक अरुणा राय जी का, एक अन्ना हजारे जी का बिल है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो वक्त की बात हो उसके ऊपर कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपका ये कॉन्फ्रेंस बहुत पहले से प्लान्ड है, लेकिन अगर अब मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है आज के दिन, तो लोकपाल में मुस्लिम, दलित और ओबीसी का रिजर्वेशन है। क्योंकि ये लड़ाई 2-4 दिन की ही है, उसके बाद में खत्म होने वाली। इंस्टीट्यूशन में जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, जिलानी साहब खूब अच्छी तरह से जानते हैं,
90 में जब 27% का आरक्षण पिछड़ों को मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ाया था। 2 साल के बाद क्लियर हुआ। 2006 में जब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन आपको मिला, उत्तर प्रदेश और बिहार का 90% तक मुसलमान ओबीसी में कवर है, यह भी आप जान लीजिए। फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ाया था। बाबरी मस्जिद में कोर्ट ने क्या किया आप जानते हो। और ये जो आज का कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जितनी नियुक्तियां हैं जजेज की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जजेज की नियुक्ति जज नहीं कर सकते। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ओनली कैन अपॉइंट द जजेज, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री बाय जजमेंट्स ऑफ देयर ओन, जजेज आर अपॉइंटिंग जजेज। नोवेयर इन द वर्ल्ड जजेज अपॉइंट जजेज। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां जज की नियुक्ति करते हैं। जिलानी साहब है कहीं? अमेरिका में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, रूस में पार्लियामेंट भी करती है, उसका आधे चुन करके भी आते हैं। ये अपने आप में इनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बाबरी, हम तो ज्यादा परेशान हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन को समाप्त किया लखनऊ हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो जो भी बोर्ड की ताकत की वजह से, चूंकि अकलियत के बोर्ड का ताकत है, मुस्लिम दलित का है, ओबीसी का है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट में है, असेंबलीज में है, दे विल डू समथिंग फॉर यू, इसलिए उन्हें वोट चाहिए। तो वॉट एवर राइट्स वी गेट फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, दोज राइट्स आर बीइंग डाइल्यूटेड बाय हायर जुडिशरी। एक परफेक्ट हमारा इनमी हायर जुडिशरी को बना खड़ा कर दिया गया इस देश में। नाउ अनदर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। ओनली 2 इंस्टीट्यूशन विल रूल द रूल्स, वेयर द मुस्लिम्स, बैकवर्ड्स एंड दलित विल नॉट बी देयर। So called upper caste will rule again the country. Democracy will go to the dogs. Parliament will be redundant. लोकपाल को इतनी पावर दी जाएगी कि पॉलिटिशियन के सारे पॉलिटिशियन के लाइफ में उसका पावर, उसका जुरिडिक्शन होगा, जितने गवर्नमेंट मुलाजिम हैं सब में। अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम का जुरिडिक्शन तभी राइज होता है जब मैटर रेफर किया जाता है। यहां तो जुरिडिक्शन इनका पूरा जुरिडिक्शन है। एनीबडी going and complaining against one MLA or one corporator or any politician, any employees, अगर मुसलमान है, दलित है, ओबीसी का है, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने, जब अन्ना हजारे जी यहां आंदोलन कर रहे थे, तो इंडिया गेट के ऊपर हमने भी एक 40-50 हजार की रैली निकालकर अन्ना हजारे जी से पूछा कि ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में हम आपके साथ में हैं, लेकिन इस लोकपाल कमेटी में हमारी जगह है कि नहीं जगह है? अगर हमारी जगह नहीं है तो ये तो लोकपाल हमारे खिलाफ काम करेगा, हम ही को भ्रष्ट कहा जाएगा। अभी मैं बोल के आया हूं कि सब्रवाल, जो चीफ जस्टिस सब्रवाल थे, बिल्डर से मिलकर के पूरे दिल्ली को सील कर दिया था। उनके बेटों ने उनके घर से कंपनी चलाई और 83 करोड़ का एक कोठी भी बगल में लिया है। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। और पीडी दिनाकरन जो चीफ जस्टिस थे कर्नाटक के, वो दलित भी थे और क्रिश्चियन भी थे। एक भी सेंट जमीन उन्होंने न्यायपालिका में आने के बाद परचेज भी नहीं किया था। उनके खिलाफ एलिगेशन यह है कि एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया है, वो ब्लैक मनी है, क्योंकि उतना वहां पर प्रोडक्शन नहीं होता और उस आदमी को जाना पड़ा। यह है जुडिशरी इस देश की। और लोकपाल बन जाएगा तो आपको मैं बता दूं कि इस देश में आप अपनी आवाज उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि मजबूत जितने अधिकारी और लीडर होंगे, इनको पकड़ा जाएगा, टेरराइज करके रखा जाएगा।
मैं आप लोगों से मैं शिकायत भी है कि अकलियत के लोग दे डोंट राइज टू द ऑकेजन। केवल हम ही खड़े हुए और पूरे देश के मुसलमान के बड़े बड़े नेताओं को फोन किया। पॉपुलर फ्रंट वालों को मैंने नहीं कांटेक्ट किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया के सारे एक को समझ में बात नहीं आई। अरे हमने कहा भाई इसमें आप अपने रिजर्वेशन की मांग करो, और हमने जब मांग उठाई तब आज पूरे देश में और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसमें कंसीडर किया गया कि मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने अपना भी साथ नहीं दिया। कई बार जो इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं, जिसके इम्पैक्ट बहुत आने वाले हैं, 100-200 वर्ष के लिए लोकपाल बन रहा है, साल के लिए नहीं बन रहा। कल परसों तक इसका ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा। 30 तारीख को सारे मेंबरान मिलकर के फाइनल शेप दे देंगे। उसके बाद आपके पास लड़ने का मौका ही नहीं है। इस बार पार्लियामेंट में टेबल कर दिया जाएगा। मैं दलित एम्पावरमेंट की ही बात कर रहा हूं। मैं एम्पावरमेंट इसके थ्रू खोज रहा हूं, सीख कर रहा हूं कि अगर इसमें रिजर्वेशन नहीं हमारा तो हम कैसे अपने लोगों को बचा पाएंगे। हमने यह भी मांग किया कि एनजीओ भी शामिल किया जाए, इस देश के कारपोरेट हाउसेस भी शामिल किए जाना चाहिए। एससी एसटी और मुस्लिम्स के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं उस फंड में बहुत बड़ा करप्शन है, गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिए जाते हैं, वो भी लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। हमने वो भी मांग किया है। आपने शायद न मांग किया होगा, पार्लियामेंट कमेटी के सामने नहीं गए होंगे। परसों यहां पर हमने रहमान जी से कहा कि थोड़ी जैसी जगह से यहां से हम स्टार्ट करेंगे, रैली निकलेगी, आप उसमें भागीदार बने। हमने तीनों की बात बराबर की, ये नहीं कि एससी एसटी की ही बात किया, हमने तीनों की बात बराबर। होल कंट्री नोज इट। इफ यू आर गोइंग टू स्टे हियर इन दिल्ली, आई नो यू हैव कम फ्रॉम far places, so those who can stay, those who are local people should participate in that rally and demand for reservation for OBC, minorities and Dalits in Lokpal। क्योंकि इसके बाद लड़ने का, जिलानी साहब, रहमान जी, लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसको पास होना ही पास होना है। तो आज के दिन में हम दलित एम्पावरमेंट को इसी तरीके से देखते हैं। दूसरा, रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की हम मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जो सरकार ने हम वायदा भी किया है 2004 में, दलित एम्पावरमेंट उसके थ्रू आएगा। मेरा समय भी समाप्त हो गया है। संभवतः कि आप परसों हमसे मिलेंगे, जितने लोग रहेंगे उसमें दलित और मुस्लिम एकता भी दिखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं। शुक्रिया डॉक्टर उदित राज साहब। अब इस तारीखी कौमी सेमिनार का सदारती खुतबा पेश करने के लिए प्रोफेसर पी कोया साहब को मैं दावत दे रहा हूं। आप नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रुकन हैं। We now call upon Professor P. Koya Sahab, who is the National Executive Council member of Popular Front of India, for his moderator's remarks. Mr. Professor P. Koya Sahab. Dear friends on the dais and in the audience, I had a hunch in the very beginning that my time allotted to me would be robbed by the speakers. We are almost 15 minutes late, and Maghrib prayer is about at 5:25, as I understand. Not that I have many things to offer. The speakers and the intellectuals and historians who have been kind enough to come over here and talk about the different topics have been able to present a very comprehensive view about the different issues involved in the theme, the people's right to justice. Of course, some of the speakers could not turn up in time. Especially missing is a discussion we thought would be very enlightening, a talk about the black laws towards a national security state. We know that during the past
2 decades of neoliberal economics and capitalist models of development, a new concept has been promoted by the powers that be, the people who are involved in controlling the nation's resources, a new concept of the national security state in which the citizens are turned into subjects without a proper say in the way we rule our land. Otherwise, the discussion has been almost complete and comprehensive. I hope this kind of discussion would remain open-ended so that we are not arriving or we are not coming to a conclusion, but which will go on talking about the different issues involved. This is not the end, but this is the beginning of a very serious discussion about the citizenship rights, about the need for a democratic space for people who are marginalized, the minorities, the Dalits and the tribals, which make up the 70% of India's population. So with this message that this should remain something like a point of further discussion, continuous interaction with the different kinds of people, I conclude my remarks and I use this opportunity to thank all the friends who have come here and all the people who have been patiently listening to what they have offered. Thank you very much. Thank you so much, Professor Koya Saab. For the vote of thanks, I would now call on Muhammad Shahabuddin Saab, who is the State President of Popular Front of India, West Bengal. हमारे स्पीकर्स और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, मगरबी बंगाल रियासत के सदर हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के. अस्सलाम वालेकुम. Alhamdulillah, now we are in ending position of this 2 days seminar on the theme People's Right to Justice. It is a vital part of historical program Social Justice Conference of Ramlila Maidan, New Delhi. It is not need to say this seminar not arrange only discussion for discussion or only talking. This important subject selected for finding a enlightened path of the people of India who really seeking for justice. We fully hopeful that this seminar will find a new idea and inspire us to fight for the social justice. Many distinguished personalities of various parts of country take part in this seminar. I give thanks to all. Especially I want to give thanks to Janab Abdul Rashid Agwan, N.P. Chikutti from Calicut, Dr. M.S. Jayaprakash from Kerala, Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SCST Organization, Dr. Suresh Khairnar, National Convener, All India Secular Forum, Jafar Gilani, Convener, Babri Masjid Action Committee, Asim Rai. আমি অসীম রায়কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি. তিনি আহমেদাবাদ থেকে এসেছেন, কিন্তু পরে তার সঙ্গে আলোচনায় আমি জানলাম তিনি বাঙালি. আমি খুবই আনন্দিত. অসীম রায়, নিউ ট্রেন্ড ইউনিয়ন আহমেদাবাদ, and also
I want to give thanks to the delegates who helped to success this seminar with their good cooperation. Again, I thanks to all. সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। शुक्रिया मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब। हमारा ये कौमी सेमिनार का दूसरा सेशन भी खत्म हुआ है। अब मगरिब की नमाज के बाद ठीक 6 बजे से हमारा जबरदस्त कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो तकरीबन 8 बजे तक चलेगा। बड़ा दिलचस्प रहेगा। हम तमाम सामाइन से गुजारिश करेंगे कि फौरन नमाज से फारिग होकर फिर इसी मैदान में सकाफती और कल्चरल प्रोग्राम को महसूस करने के लिए जरूर तशरीफ लाएं। The national seminar, People's Right to Justice, concludes here, and immediately after some time at 6 o'clock, very colorful and interesting cultural program. We request check. Hello, check, test, hello. once again.